Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I am Muhammad Arshid Shehzad and you are watching English with Arshid. I am here to share with you the poems of first year English from book 3. Today our topic is the rain. The rain इसे उर्दू में बारिश कहा जाता है. This poem has been written by W.H. Davis. इस नज़म को W.H. डेविस ने लिखा है. This poem is about rain and effects on leaves, atmosphere, and human life. So let's start. Before starting, I would like to share with you the central idea with Urdu translation. The central idea of the poem is that the rain is a great phenomenon of nature. इस नज़म का मरकज़ी ख्याल ये है कि बारिश फितरत का एक ज़बरदस्त मज़हर है. It brings water for all green leaves on the top, drink water and get fresh. ये सबको पानी मुहैया करती है. दरख्तों की बुलंदी पर सब्ज पत्ते खूब पानी पीकर तरोताज़ा हो जाते हैं. Rain water falls drop by drop on the thirsty leaves below. बारिश के पत्तों से बारिश के कतरों से दरख्तों के पत्ते जो प्यासे होते हैं वो ये पानी कतरा कतरा टपकने वाला कतरा कतरा पानी पीकर प्यास बुझाते हैं. The falling drops of rain produce a sweet noise. बारिश के गिरते हुए कतरे एक सुरीली आवाज पैदा करते हैं. After the rain, the sun comes out of the clouds. बारिश के बाद बादलों से सूरज जाहिर होता है. It looks more bright. ये पहले से भी ज्यादा रोशन नजर आता है. The scene of the sunshine is a source of pleasure. धूप का खूबसूरत मंजर बड़ा लुत्फानंदोज होता है या लुत्फ देता है. Difficult words and their synonyms used in this poem. Beneath, नीचे, under, below, underneath. Sweet, अच्छा, दिलकश, खुशगवार, attractive, beautiful और delight. Wondrous, हैरत अंगेज, नाकाबिल यकीन, wonderful, surprising. Lovely, खूबसूरत, beautiful, pretty. और sight, बसारत दीद यानी मंजर या नज़ारा, see और behold. Now let's start with the translation. I hear, मैं सुनता हूँ, leaves पत्तों को, drinking पीते हुए, rain बारिश का पानी. I hear, मैं पत्ते बारिश से सैराब हो रहे हैं और इनके पीने की आवाज़ में सुनता हूँ. I hear rich leaves on top. दरख्त के ऊपर वाले हिस्से के साथ सब्ज पत्ते भी सैराब हो रहे हैं. Giving the poor beneath drop after drop. कतरा कतरा करके पानी मिल रहा है. Is a sweet noise to hear. सुनने के लिए ये बड़ी खुशगवार आवाज है. The green leaves drinking near. सब्ज पत्ते खूब एक दूसरे के करीब से पानी से सैराब हो रहे हैं या पानी पी रहे हैं. Now paraphrase or reference. These lines have been taken from the poem The Rain, written by W.H.
Davis. Context: this poem is about rain and its effects on leaves, atmosphere, and human life. Rain is a great phenomenon of nature explanation. In the given lines, the poet says, when rain comes, the green leaves on the top seem to drink its water. From the leaves on the tops of trees, drops of water fall down on the faded leaves. These leaves also get green. Rain falling on the leaves produces a sweet noise. The sunshine looks brighter after rain. Second stanza. And when और जब the sun सूरज comes out, जब सूरज निकलेगा, after this rain shall stop, और इसके बाद बारिश रुक जाएगी, and a wondrous light will fill, तो हर तरफ एक हैरत अंगेज रोशनी फैल जाएगी. each dark round drop each dark round drop, हर कतरा जो है, हर तारीख और गोल कतरा चमक उठेगा, यानी हर तरफ रोशनी हो जाएगी. आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मुझे उम्मीद है कि सूर्य खूब चमकेगा. इट विल बी अ लवली साइड, ये बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होगा. रेफरेंस: these lines have been taken from the poem The Rain, written by W.H. Davis. Context: this poem is about rain and its effects on leaves, atmosphere, and human life. This is a beautiful poem about rain. The rain falls on the leaves and produces noise. The scene of sunshine after the rain is lovely and is a source of pleasure. Explanation: in the given lines, the poet says after the rain stops, the sun appears again. Its wonderful light spreads everywhere. This beautiful light brightens up and sparkles each round drop on the leaves. The poet says that the sun shines in full brightness and makes the scene lovely. The scene of the sunshine after the rain is lovely and source of pleasure, etc. Dear students, I hope you have understood all the things which I have discussed with you, and you will see next lecture in the next lecture. Allah Hafiz.